Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our main topic, and that is solution of nonlinear equations. Students, uh, the first main idea about the finding of solution of the nonlinear equation is that we actually need to find out the root of the equation. What does it mean? What is the root? In simple words, students, if we have any function, say f of x, here you can see my cursor, f of x is equal to 0. Now we have an equation. And maybe we have the nonlinear equation here in this case, because we are in your course, we have the equation of type nonlinear. And now we have considered the equation f of x is equal to 0. So students, we want to find out the values of x such that f of x is equal to 0. Then x is basically the root of that equation. Here x is general variable, so it does not mean that all the values of x are the roots of the equation. So in particular, for example, x has the value, say alpha, then f of alpha is equal to 0 here in this case, and that is the solution, or you can say the root of the equation. Basically, you can also consider this one as the solution of the equation, because once we insert this value in the equation, then the left hand side and the right hand side will definitely be satisfied. तो स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं बेसिकली इसमें रूट फाइंडिंग का मतलब क्या है. इट मींस कि हमारे पास कोई भी एक, चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो का है, तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और अब हमने यहाँ पर करना क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 में x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए. आपकी इक्वेशन जो है वो डेफिनेटली इट वुड बी सेटिस्फाइड, सो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा डेफिनेटली. तो दैट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है कि वो x की वो वैल्यू है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए. तो बेटा ये आपके पास अल्फा जो कहलाएगा, दैट वुड बी द रूट ऑफ द इक्वेशन. Now in this section, basically this is the first section of main section of your course, and this talks about the solution of the nonlinear equation, and here we will mainly discuss about the four main methods. The first one is bisection method, and then we will talk about the Newton's method, and the secant method and method of false position. Basically, in most of the books, bisection method, Newton method, and secant method are the main methods which are considered, because in secant method and method of false position there is a very small difference, and but somehow we will talk about this inshallah. So let's start our first method, and that is the bisection method. Students, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट में ही कुछ अजीबोगरीब आपको हो सकता है लग रहा हो, कुछ लाइन लगाई हैं, कुछ फंक्शन बनाए हैं. And basically this is your x-axis, and a line or a curve is intersecting this line. Now the question arises actually that what does it mean if we have an equation? If we have an equation and we are saying that f of x is basically the function, and it becomes 0, where it becomes 0, it means it will where it will touch the x-axis. Student, here you can see this is your, for example, x-axis, and now this is the line. So this line will touch this straight line at this point. So this point is basically the root of the equation. Similarly, if you see this one, so this one is the root. Here in this case, this one is the root. So you can see this point is basically the root of the equation. And here we have more than one root. So see, this one is your 1 point root, 2 points,
and 3 point. So 3 roots are there in this equation. And student, in the last function, you can see that this curve, this one. So here you can see that this curve is not going to touch any point of this x-axis. So that's why f of x has definitely a positive value here, is greater than 0. Non or I must say non negative and non-zero value, positive definitely value here is here. तो बेटा आपके पास बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका पॉइंट जो है जहाँ पर एक्स एक्सिस को फंक्शन जो है वो कट करेगा, तभी जाकर आपके पास y की वैल्यू या आप जिसको आप फंक्शन कहते हैं f of x की वैल्यू जो है वहां पे 0 हो जाती है ना। तो इसीलिए आपका वो पॉइंट जिस पे आपका फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को कट करता है, सो दैट पॉइंट इज योर रूट ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट्स आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा बताऊं कि कोई भी आपके पास ये जो हमने बात की कि हम 4 मेथड्स के हवाले से बात करेंगे, ये 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे। ये चारों मेथड में जो मेन आइडिया है दैट इज सेम। द मेन एसेंस ऑफ दीज मेथड्स इज बेसिकली द सेम। और वो अगर आप लॉजिक आप समझ जाते हैं तो फिर आपके पास जो है वो बाइसेक्शन मेथड हो या आगे न्यूटन मेथड हो या सीकेंड मेथड हो या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन हो, कोई भी मेथड आपके पास हो तो बेटा वो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। लिहाजा ये जो एक की आइडिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो students, this is very important that the thing which I am going to tell you about the main idea, about the root and about the law. This is very important because once you understand this logic, hopefully, inshallah, there will be no issue for you to understand all the methods because the main idea is same. And let's talk about the main idea. So that's why here I have given these 4 functions or 5 functions, whatever the functions are. So, or whatever the curves are. So students, let's see in this graph, the first one. So you can see that this point, students, this point where my cursor is, so the upper function, upper point, at this point the function is positive because this is the above x-axis, and this point here is your point where this is below x-axis and the functional value or function value is negative here. So function is positive at one end, whereas function is negative at the other end. And students, if we simply multiply these two functional values, then the answer is negative because one is positive and the other is negative. And if you multiply this one, the whole answer is negative. And see, this is very important here. And if the function is positive at one side and on the other side, this is very important, student, that the function should be continuous. Yeah, so this is very important. The function is continuous and at one end, the function is positive and the other end, the function is negative, no matter whatever the ends are, then there exists a root. At least one root will exist. How? Students, see here. This is the point here. This is one point. This is second point. One is positive and this one is negative. So students, in this case, if you multiply the function values, so they are negative. So in this case, in the second graph, so you can see that the first point is negative functional value and the second function value at the other end is positive. So positive, negative, negative. So again, the root definitely lies within this interval. Students, now if you see this one, this third one, this is again this positive and the second end is negative. So what you can see is that, so it means because if we have one positive end and the second the negative end, and or the first negative end, the second is positive end, so it means, and the function is continuous, it will definitely cross the x-axis.
So this is the main idea. This will definitely cross the x-axis. So it means if it is crossing the x-axis, so it means that is the basically your root point, your value where the function is 0, and that is called the root. So at least one root will definitely exist. If you see the fourth function here, so students, you can see that this is positive. And if you are going down here and even going up and then down, even if I simply take the okay, I will do it later, but let's see this one. So you can see this is negative, so this one is positive, and this one is, this end is negative. So at least one root exists. But now in this case we have three roots, 1, 2 and 3 roots. Students, if I change the curve here, let's say, let me change the curve. Let's see now. Now you can see that this is your positive and this one is your again positive. This one is again positive, but root is again lying. But this is like, you cannot say that if both ends are giving positive function values, then definitely there will be a root. No, not at all. There may be any root, there may be one root, there may be more than one root, there may be 5 root, 7 root, 10 root, there may be no root. For example, here in this case, in the last function, so you can see, so this is plus point, plus function, and this is again plus, but there is no root. So the function is not going to touch the x-axis. So students, here you can say that there is no root at all. So students, now I hope you understand this idea that how you can say that this is your root or not. So the main idea, let me repeat it. Students, देखें, अगर बेटा आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसका कोई एक पॉइंट चूज करें, या कोई इंटरवल हो सकता है आपको गिवन हो, या अगर नहीं गिवन तो अगर आपके पास कोई भी आपने एक पॉइंट लिया और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एक दूसरा पॉइंट लिया नेगेटिव आ गई, तो उसका मतलब है उन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाजमी तौर पर रूट एग्जिस्ट करेगा। एक पे नेगेटिव आ गई, दूसरे पे पॉजिटिव आ गई, लाजमी रूट एग्जिस्ट करेगा। दोनों पे पॉजिटिव आ गया या दोनों पे नेगेटिव आ गया, तो बेटा ये बात जरूरी नहीं है कि रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है कर जाए, हो सकता है ना करे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा इस केस में, इस फंक्शन में बेटा, यहाँ पे मेरा कर्सर माउस जो है वो मौजूद है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी इस केस में पॉजिटिव है, लेकिन रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस केस में दोनों पॉजिटिव है लेकिन रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे इस तरह रखता हूँ, एक नेगेटिव है, लेकिन अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि एक रूट हो सकता है ज्यादा रूट आपके पास आ जाए। तो स्टूडेंट्स, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वो क्या कहता है, कहता है जी, बाइसेक्शन इज अ मार्वलसली सिंपल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन लिटिल मोर देन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। अब यहाँ पे वो, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, वो क्या बात कह रहा है, कहता है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। अगर इस तरह हो, दिस मीन्स दैट एफ इज नेगेटिव एट वन पॉइंट एंड पॉजिटिव एट द अदर। So if we assume that f is continuous, then it follows by the intermediate value theorem that there must be some point, मतलब वही है बेटा बात जहां पे वो कह रहा है f is 0। In other words, बेटा वो कह रहा है कि अगर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, तो रूट विल डेफिनेटली एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जी बेटा, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने अब मेथड देखना है कि हमारा, वो तो आपको बता दिए कि रूट के वाले से, कि रूट कौन से दो पॉइंट हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि यूज द बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले तो वो इंटरवल फाइंड आउट करना है। बेटा इंटरवल, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको इंटरवल गिवन होगा। दिस इज नॉट कंपल्सरी। हो सकता है इंटरवल गिवन हो सकता है इंटरवल आपके पास ना हो। अगर नहीं है तो फिर आप वो इंटरवल निकालें, कोई भी दो पॉइंट चूज करें और उसमें फंक्शन की वैल्यू चेक करें। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह आती है
तो इसका मतलब है कि रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं आती तो फिर रूट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। या हो सकता है कि रूट एग्जिस्ट कर जाए अगर दो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन आपका चूंकि डाउट होगा तो इसलिए आप ऐसे दो पॉइंट्स चूज ना करें। अगर फर्ज करें आपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द रूट, और आपने क्या किया कि आपने दो पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए जहां पे दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो आपने कहा जी कि दोनों के पॉजिटिव वैल्यू आ गए तो मैं अब इसको स्टार्ट कर दूं, शायद निकल आए रूट, तो बेटा इस पे वक्त जाया ना करें। So students, this is very important to note that if, for example, if you have been given the interval, then this is quite easy. You can start from those 2 points. But if the points or the intervals are not, an interval is not given, then you need to find the point such that the function is positive at one end and on the other point the function is negative. Although the root can exist between the points where the both function values are positive or negative, but you should not take any risk because there is a chance that there will be no root at all. Maybe there can be a root, but you should not waste so much time. Okay, so students, here we have now the method, and this is very simple method, students, very simple, very easy method. And you will be surprised to know that this is such a simple method, but it gives you very accurate root, but it takes a lot of time. The drawback of this method is that this is basically a slow process method, and it takes a lot of time. So students, आपके पास क्या है कि what it says, first of all, you have to find out the interval. Let me draw. I guess it would be much easy for you if I simply take a new function. So hopefully you can see this one. Maybe I can change the color here. Okay, yeah. So now students, once again I take any curve here. Let's say I'm considering a curve here. Let's say any curve here. And now this is one end, students, and this is your second end. So students, let's check at the points. First of all, at this point, at a point, you can see, since you don't know about these values, at this time, you don't know about the root, because in the beginning, you don't know where the root is. Although I have already shown you, that's why I have used the color blue. Assume that you don't know where is my root. So you just have this interval. This is your A and this is your B. Now students, check where the function is. Let's say here the interval is positive here. Let's say it is positive here, and here it is negative. Maybe if you want, I can simply write for you, students. So let's say here, let's say we have A, and let me write here so that it would become easy for you. Let's say this is your B, and let me change its position. So students, here is A and here it is B. And now we are going to check the functional value. And let's say we call this one, say F. Uh, let's say we have F here. Now I'm going to check the function value F. Students, let's say this one at this point, this is maybe, let's say negative. Okay, let's say we write this one as the negative value because in the beginning you don't know what the answer is. So let's say this is your negative answer, right? And this one is your on the other side. Let's say this is your positive answer. Let's say so here this is positive. So it means root lies within this interval. So now students, there can be three possibilities. What is the first possibility? Both are different. So this is the first possibility. F of A into F of C is less than 0, right? And
Now their interval, root exists. Now student find out the middle value, and that is c is equal to half of a plus b. Now this is your middle value. Let me take a line here so that you understand that this is your middle value. Let's say maybe not exactly, but let's say this is your middle value, students. I'm using the different color. This is the middle value, and this is your c point. Let me write it here. This is your c point. So this is your c here. So students, now if it is a here and where negative value is here and this is positive here, and at c maybe any value, let's say this is positive here. So let me write it here, maybe it's positive. So student, this is giving you the positive value. So this is now basically there can be three possibilities. The first possibility is f of a into f of c is less than 0. Now this is the case. See, a is negative and this is positive, so root lies between this interval between a and c. So the root lies between a and c. Now what can be the other possibility? Students, maybe this curve exactly lies, maybe let me show you here, maybe this curve lies at the same point c. So that is the root. So it means f of c is equal to 0. So let me come back to this one. So this means this is your root. So that's clear. So if f of a into f of c is equal to 0, and if we assume that we already know f of a is not equal to 0, this means f of c is equal to 0 and alpha is equal to c, and we have found a root. That's it. Now the third option, if f of a and f of c is positive. Let's say this a is positive here and this is also positive. So the root will not exist in this interval. So it means the root should exist within this interval. So students, there are three possibilities. बेटा सुन ले जरा, देखें आपके पास क्या है. बेटा आपके पास हमें नहीं पता शुरू में a के ऊपर पॉजिटिव आंसर है फंक्शन का, नेगेटिव आंसर है, b के ऊपर पॉजिटिव है, b के ऊपर नेगेटिव, हमें नहीं पता. लेकिन हमें इतना पता लग गया a के ऊपर पॉजिटिव, a के ऊपर नेगेटिव है. अब फर्ज करें a के ऊपर नेगेटिव आंसर है और बी के ऊपर पॉजिटिव आंसर है. अब आपने क्या किया, सबसे पहले मिडल पॉइंट निकाल लिया, सी इज इक्वल, बस जस्ट ये एक फार्मूला देखा जाए तो है सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी, ये आपने मिडल वैल्यू निकाल ली. अच्छा बेटा, अब आपने मिडल वैल्यू के ऊपर फंक्शन का चेक करना, वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ सी निकालेंगे आप. एफ ऑफ सी अगर तो फर्ज करें पॉजिटिव है तो फिर कहाँ आना चाहिए, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इसका मतलब रूट इसके अंदर लाई करेगा. अगर इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव, इसका मतलब रूट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर सी के ऊपर फंक्शन वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब वही तो रूट है, वो तो रूट ही बन गया. ठीक है, तो लिहाजा बेटा इस तरीके से आप प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे. अब फर्ज करें यहाँ पे आपका नेगेटिव आया, ये सी के ऊपर पॉजिटिव आ गया. अब आप दोबारा से, अब आपको ये पता लगा, इंटरवल देखें छोटा हो गया, ए टू सी अब इंटरवल रह गया आपका. अब ये खत्म हो गया, ये हाफ पोर्शन अब आपका छोड़ दें इसको, अब आपने इसको कंसिडर नहीं करना. अब बेटे छोटा हो गया ना पोर्शन, अब इसको फर्दर हाफ करें. चले मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ. लेट मी ड्रॉ वन मोर लाइन हियर स्टूडेंट्स. So now we have found a new interval that is between a and c. So we can say the root lies between a and c now. Now let's find out the center value. Maybe this one is the center value. This is the rough idea, but you can calculate this one. So students, if you want to change the color, let's say maybe, okay. So this one, dotted line. So this is your new point. This is C1 and this is now C2. And now students, here it would be negative value. If it is negative value, let's say, let me write it here. So this one is maybe, so if this is negative here, so then this is negative,
and this one is positive. So root lies between this point and this point. Once again, the interval has been shortened. And now once again, find out another point, half. Once again, make it half. So, sorry, let me draw the line here. Insert. And students, let's say this is your point, the next point. So now the root will lie between this interval and this. If you take the half, then maybe this will be your root of the equation. So students, क्या करेंगे बेटा, आपने इंटरवल जब लिया तो आप देखें आपने बड़े इंटरवल से हाफ किया, उस हाफ को फर्दर हाफ किया, इस तरह आप हाफ हाफ करते जाएंगे, आखिरकार आप रूट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपने रूट फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये थोड़ी सी डिटेल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे गिवन है, तो ये आप बेशक पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। वही बात है कि किस तरीके से हम चूज करेंगे कि रूट जो है वो आपका ए और सी के दरमियान में लाई कर रहा है या सी और बी के दरमियान में लाई कर। इस तरह आपकी हर लेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हाफ होती जाएगी बेटा। ठीक है, तो बेटा अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि, या चलें ऐसा करते हैं कि बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे फिलहाल हम इसको जरा स्टॉप कर रहे हैं, तो आप अपना क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।